guys, what's up? Welcome back to my channel. This is your Shreya Shah and I am up with a new YouTube video of mine. Before that, please take a moment to like, share and subscribe to my channel. Also, today's video is about my new skincare routine. So yes, आज मैं skincare बताऊंगी और मैं जो products नए लाए हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी. So do not skip the video. ठीक है स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बाल ऊपर बांध तो चलिए शुरू करते हैं. मैंने अपने बाल बांध लिए और जो भी मेरे पिंपल है उसको मैंने ये एक्ने स्पॉट से कवर कर लिया है क्योंकि हम लोग पिंपल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करेंगे. प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑन योर पिंपल. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. एक्चुअली फर्स्ट स्टेप बेसिकली मेरा हो गया है जो है क्लेंजिंग. जो मैंने क्लीन किया है सेटाफिल ऑयली स्किन क्लेंजर से. अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे मेरे स्किन केयर रेजिम पे. तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है दैट आई यूज इज chia seed toner. This is used for toning. After cleansing, this is the first step that we can use. तो मैं सिर्फ इसका 2 स्वॉश लूँगी हाथ में. रब. Don't forget your neck. तो टोनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो टोनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके फेस पे 2 अलग अलग शेड्स या टोन्स ना दिखे. तो ऑलवेज मेक श्योर यू टोन योर स्किन वेल बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. सो या दिस इज माई फर्स्ट स्टेप डूइंग माई स्किन केयर रेजिम. लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा थोड़ा सा होता है अलग. तो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ सेरम. तो थोड़े से जो भी डार्क स्पॉट्स हैं और इसके लिए आई यूजुअली कंसिडर टू यूज द सेरम. I use this. This is from Plum, and this is the niacinamide rice water serum. It is really hydrating. I mean, मुझे बताना नहीं पड़ेगा मैं जब अप्लाई करूँगी. रहा नहीं जाता. एकदम हल्के हाथों से जस्ट मसाज. Always in the upward direction. इसका हाइड्रेशन देखो. See the gloss that glitters. ओह यार ये कितनी औसम है यार. नाइस राइट. तो ये है सेकंड स्टेप जो मैं इंक्लूड करती हूँ अपने स्किन केयर के लिए. नाउ विल हॉप ऑन टू द थर्ड स्टेप. तो मेरा जो थर्ड स्टेप है वो है मॉइस्चराइज. एंड आई एम यूजिंग द सुपर क्यूट प्रोडक्ट फ्रॉम द डॉटन की. इट्स द स्किन केयर वाटरमेलन सुपर ग्लो मैट मॉइस्चराइजर. सो ग्लॉसी में ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे पिंपल का प्रॉब्लम है. तो आई ऑप्ट फॉर मैट एंड इट लुक्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, एंड सुपर मैट, सुपर हाइड्रेटिंग. लेट्स गो. ये नया प्रोडक्ट है. आई हैवंट ट्राइड दिस येट बट I am just loving it. I mean, इसका texture is so silky. Wait, I'll show you guys a swatch. Can you see? See, this is so nice. Super hydrating. After applying, just press it into the skin. See how much difference does it make? So never skip your moisturizer. Please always keep it in a handy bag. Moisturizing and sunscreen ये ऐसे steps है जो हम लोग ने नहीं skip करनी चाहिए. हम लोग बहुत बार करते हैं. Let's hop on to our fourth step. लास्ट स्टेप ऑफ माई स्किन केयर जब मैं बहुत बाहर नहीं जा रही हूँ या घर पे कर रही हूँ या यहीं आजू बाजू में कहीं जा रही हूँ, आई डू इज use the sunscreen. I'm using this superb sunscreen from the Studio West Protect SPF 50 PA4+, and it's a UVA UVB protection देता है. Also it's weightless, it is non-greasy and it is a gel sunscreen. Gel sunscreen बहुत सारे नहीं हैं अच्छे ब्रांड्स में. मतलब मैंने ट्राई किया है बट
I don't know, they are super sticky, they are super greasy, they leave white cast और patches लग जाते हैं white which I don't like. I'm just taking a small amount of my sunscreen. See? You can see the texture. Don't forget your neck. Never. ट्रस्ट में हमें लगता है कि सनस्क्रीन कोई डिफरेंस नहीं आ रही, कहाँ धूप में नहीं जा रहे, बट एक बार अप्लाई करके देखना और फिर आपकी स्किन क्वालिटी देखना और एक बार बिना अप्लाई किए जाना एंड सी द डिफरेंस. इट्स जस्ट अमेजिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि खाली सन से ही प्रोटेक्ट करता है सनस्क्रीन, बट इट ऑल्सो मेक श्योर दैट यू नो ऑल द डस्ट एंड इट डजंट कम रियली ऑन योर स्किन. तो आके जब आप घर पे फेस वॉश करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपका कितना हद तक स्किन प्रोटेक्ट हुआ है. तो नेवर स्किप दिस स्टेप ऑफ सनस्क्रीन. एंड दिस सनस्क्रीन पर्टिकुलर ये वाला जो है स्टूडियो बेस्ट, इट्स अ टाटा ब्रांड. आई एम गोना कीप इट इन माई हैंडी so that you know I can apply it anywhere and everywhere I want. It's SPF 50, so opt for it. I'm just telling you, try it out. So yes, let's see my look. Let us do that. I am done with my skincare. यही है basic skincare जो मैं अपने स्किन के लिए before makeup या जो भी मैं यूज़ करती हूँ. So I will show you the look. Hi guys, so I have opened up my hair and this is how my skin looks after doing my summer regime or skincare regime for the summer. So yeah, see what difference does it make? It really does. I mean the luster, ऐसा लगता है कि आपकी skin बहुत fresh हो गई है या you know you filled it up with water and that's the beauty. I mean in summers you need a lot of hydration, like also your body and even your skin. तो बहुत बार हमारी skin dry हो जाती है जिसकी वजह से acne problem आते हैं. Also don't forget to drink water up to like minimum 3 to 4 liters, जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट्स कम होंगे. मेरा रीज़न यही है ब्रेकआउट्स का, दैट मैं ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, बट आई मेक श्योर दैट आई हाइड्रेट माई बॉडी ऑल्सो, नॉट जस्ट माई स्किन. सो येस, ये वीडियो यहाँ तक ही था. इफ़ यू गाइज वांट मी टू पोस्ट समथिंग एल्स, रिव्यू समथिंग एल्स और यू नो ब्रिंग सम प्रोडक्ट्स एंड ट्राई इट ऑन माई सेल्फ, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू वांट. आपको क्या चाहिए, मेकअप चाहिए. इसके बाद आई एम लुकिंग फॉर अ गुड मेकअप वीडियो, बट फर्स्ट आई नीड योर सपोर्ट फॉर दिस वीडियो एंड देन वी कुड जम्प टू द नेक्स्ट वीडियो. सो येस, अप टिल देन stay healthy, stay safe, be precautious about the COVID and also keep loving me, supporting me. Do not forget to like, share and subscribe to my channel so that you get all the updates of my videos and the stuff that I make. Until then, I love you. Stay blessed. We meet next time.